Oh, no? We will wait another 5 minutes. Let some people join. There are about 31 people already joined. Okay, till then we will start in 2 3 minutes. Till then, if someone has some queries about the course or queries about the sessions or the curriculum about the course, they can ask me the question. For asking the question, you just need to raise your hand. So if anybody has any question or query regarding this course or session, he or she can raise his hand. I will unmute from here, or also can ask the question in chat box. First of all, am I audible and visible to you all? Am I audible and visible to you all clearly? Thank you, Dr. Priyanka. Good afternoon, Dr. Priyanka. Very good afternoon. Okay, so uh, yes, Dr. Jatinder, thank you. Thank you all for giving the confirmation. So, do you have some or the other questions regarding the curriculum, course, or anything? Good afternoon, Dr. Yogeshwar. Okay, friends. So we'll start today's first session. Yes, good afternoon to one and all. So first of all, friends, I would like to introduce you myself once again. Myself, Dr. Swapnil Gawande, Ayurved consultant for pain, stress, and sport injury management. I am working as a honorary sports medical officer with Krida Prabodhini, which is an boxing academy for the Maharashtra government's Chhatrapati Krida Pit in Akola, Maharashtra, and also doing the private practice in pain management. I have done my BAMS in 2009 from MUHS from Ayurved Mahavidyalaya Pusad. And then after I have done the PG diploma in arthritic care from Mumbai,
After that, I have done my diploma in osteopathic manipulative practice, that is DOMP from Japan, and I have also done the mastery certification in manual therapy from USA, that is from hands-on seminars, which is a very esteemed manual therapy institute in New York. Then I have also completed my certificate of osteopathic manual therapies from uh, OMT trainings under Dr. Gils Gayer. I am also been trained in Marma therapies. Also, I would like to share you. Yes, Savita Pasalkar madam. Savita Pasalkar madam, we are going to understand each and every aspect of sport injury and other injuries in this amazing course, which is specially designed by me for you peoples. So, just I would request you all to be calm, just be patient. You will going to get each and everything which you want. So, I would like to share my simple journey. I was a medical officer and was having two hospitals in Bhiwandi, and I am practicing as a very good general practitioner in Kalyan after till the 8 years of my practice. And after that, one fine day, my guru, Dr. Amdas Awad sir, how told me that Swapnil, you are a very good doctor, but you will never be a number one in any field. So I asked sir why, because he told me that you are not practicing Ayurveda, which is your basic qualification, which is your prime degree, or you have been trained in the science in which you have trained. So I asked sir, what should I do then? Then sir asked me that come to Kopargaon for some days and then take your decision. So I shut down. I have withdrawn my partnership. I have left my job. I have left my well settled general practice after 8 years and go to the gone to the Kopargaon, practice under our sir for 1 month. Then I have gone to the Dhude, practice among might be around 2 weeks at Dhude under the guidance of Praveen Joshi sir. So these two legendary Ayurvedacharyas are behind my today's success. After that, I shifted from Mumbai to Akola, my native place, and started the first specialty pain management clinic in Ayurveda. So then as I was a judo player in my school days, in my college days, so I that interest in the sports got uh, nurtured by one of my friend, Dr. Satish Chandra Bhatt, who is a renowned boxing coach in India, who has produced around 5 international boxers for India and numerous national boxers. And he gave me the opportunity to treat the sport injuries. Then, out of that interest, I have done my MSc in sports sciences from Pune, uh, and now also I have done the fellowship in sports rehab from Apollo Hospital. So this was my short journey starting my career. And now speaking about the course, first, uh, before understanding or before proceeding to the course, I would like to share with you some of the importance, or how important or how vast and untouched field is sport injury management. You can open the new doors of horizons for your practice. You can be the pioneer in this practice if you do it with a passion, with an interest, and it is a very interesting and rewarding field. So I would like to share with you the video which I tried to share in the introductory lecture also, but we will.
uh, see, and then I will come back to you again. So, welcome you all to the first lecture of understanding the sport injury. First, we will understand the importance that how government and central government is promoting Ayurveda and other Ayush pathies in sport injury in the field of sport injury management. Now you can see that these are the some of the examples that how government is promoting the sport injury medicine or sports medicine in Ayurveda. Or Ayurveda in sports medicine, how government is pushing. The first center based on the Ayush sports medicine set up in Kerala. Then the second is coming into the Karnataka. That is the Karnataka's first government Ayush sport medicine center. And government has a scheme called Ayur Swasthya and in of the Ayush ministry. And in this Ayush Swasthya, there are three main components. The first component is Ayush for public health, Ayush, and the second one is the Ayush for sport medicine and the upgradation of the facilities or to the center of excellence. So, if you have the capacity, if you have built or you can associate with the good sporting institutes, then you can also upgrade your clinic as a center of excellence in sports medicine. Now, in the northeast, also in the remote states like northeast, Ayush sport medicines and Ayush therapies for the in the field of sports are getting popularized, and government and the central government is taking efforts for that. So, oh my, so the audio of the video was not audible to anybody, or it was simply not audible to some people. Yes, Dr. Kavita. Yes, Dr. Kavita. Okay, okay, okay. Okay, I will speak with the organizers. Just give me a minute because if there is no audio,
then it will also be a problem in our other videos. राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे. Was video audible to somebody? Some were not audible. So I will put that video into the group. We will let it be. But I have given you the example so that you can be more vigilant about this particular field. Now coming to our main topic of now, we'll start our basic lecture. सर व्हिडिओचा हॅलो सर तो व्हिडिओ काही परत ऐकू नाही आला. व्हिडिओचा आवाज येत नव्हता तेव्हा सर आपण हेडफोन लावले होते का? हो नाही मे बी तो प्रॉब्लेम आहे का, एकदा आपण नंतर चेक करू. बरं मी तसं बोललो की कारण की मी हेडफोन लावलेले आहेत आता, मगा लावले होते की नाही माझं लक्ष नाही. ते चेक करू सर आपण. ठीक आहे जाऊ दे आता, ते काही एवढं इम्पॉर्टंट नाही हो, हो. कारण की बाकीचे व्हिडिओ इम्पॉर्टंट राहतील. Okay, is the PPT visible to you all? So we will start the today's topic. Okay then. So why I have said earlier that be calm, be patient, that you are going to understand everything, because as in the today morning in the group also I have explained that how this course will progress and how we are going to understand. So the first part or the first part of this course is about the understanding of the sport injuries. So the first lecture we are going to see about the understanding that what actually happens when a sport injury happens to anybody. I hope I am audible clearly. I hope that I am audible clearly. To please someone type yes if I am audible clearly, because it's a one-way communication, so it gets difficult for me to understand. Yeah, thank you all. So this is the sport injury concept is important because this is not going to help you in just treating or understanding the sport injuries, but it will help you in understanding each and every kind of injuries in which are happening. Might be related to sports, might not be related to sports, might be pathological, might be physiological, any kind of things. But this course and this particular section of understanding the sport injury will broaden your uh, vision of looking towards the any pain or any kind of injury or any kind of deformity, structural or anatomical deformity. Your vision will definitely be changed. So in the today's first lecture, we are going to understanding
understand the sport injury. In tomorrow's lecture, we are going to understand the process of diagnosis, that is how to diagnose. And in the day after tomorrow, that is on the Saturday, we are going to understand that how Ayurveda principles can be associated with the modern terminologies of the sport injuries. Because first you all have to understand that if you want to be a professional, if you want to be the present yourself as an expert of something, you should know all the plus minus and all the aspects of that field. So if a professional sportsman come to you and he is complaining about you, or he is explaining something, some injury, or any gym goer, or any of the professional player or seasonal player or a gym or fitness freak person comes to you with a particular injury, then definitely you might not be the first doctor. He might have visited some other doctors, some physios, some allopath, some orthopedic surgeons, and then he will come to you. And when then you must understand what was the diagnosis made before the patient comes to you. Then again, the patients in the big cities, metro cities like Pune, Mumbai, Delhi, they all know, they all understand about the. So you have to be one step ahead of them. You should be able to explain them that how you are going to help them with the rehabilitation, with the treatment, and with the performance. Because treating the sport injury is not just controlling the pain, or just managing the pain, or just reducing the pain. The insta pain management does not mean the sport injury management. So you have to be very clear about that. And for that, you should have that thorough knowledge, thorough understanding of the injuries, so that you can treat them well, you can explain them well, and you can earn more respect, you can earn more money, and you can earn more satisfaction from the practice, from the treatments, or from the healing process you are giving to the patients. So don't be panic, don't be impatient while asking the questions, while raising the queries. Be with me, enjoy the journey of learning, enjoy the process. Don't bother about the result. We will bother about the result on 14th February. Okay, till then enjoy the learning, try to understand, just feel like you are in the first year of your graduation, first year of your BMS. Okay, so let's understand that is what's the sport injury mean. The name itself suggests that the sport injuries are injuries that most commonly occur during the sports or exercise. Then the common causes for the sport injury are accident, poor training practices, improper equipment, lack of conditioning, insufficient warm up and stretching. Insufficient warm up and stretching. So these are the common causes, and which is the most common or the simple definition for the sporting injury. So this injury can happen to anybody only as they are more common in sportsmen, hence they are called as sports injuries. Okay, one more thing I would like to ask you before proceeding, that all are comfortable in English or Hindi. We are going to be the bilingual, trilingual. If somebody are I can speak English, Hindi, and Marathi. So anybody who is from Marathi, they can ask query in any of the language. The language of instruction is in English only because there are some uh, students, there are some participants who are from Kerala or from South India. For their understanding, we are explaining in English. Okay, we can also, yes, मैडम, हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं, हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों में बात करेंगे.
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमें समझना ज्यादा जरूरी है. गॉट इट? सो लेट्स सी. सो दिस इज द कॉमन स्पोर्ट इंजुरी कंसेप्ट. सामान्यतः जो होता है स्पोर्ट इंजरी का डेफिनेशन हमने देखा, कॉमन कॉज देखे. अब हम देखें कॉज क्या होता है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं. तो कॉज होता है, फर्स्ट होता है एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, ओवर यूज इंजरी और अनएक्सपेक्टेड फोर्सेस. जिन जिन लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा है उन लोगों ने ये सारी चीजें समझी है. बस हम इनको आज थोड़ी ज्यादा डेप्थ में समझने वाले हैं. सो एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इनिशियल थिंग कि द causes of injuries are external forces, internal forces, overuse and unexpected forces. So the external forces are like collision between the two, दो players का एक दूसरे से भिड़ जाना. Then internal forces are the forces which are created by the internal tissues, internal muscles, while exerting the extra pressure on them. For example, athlete have suddenly changed the speed or the suddenly change his direction of running, then the additional pressure is exerted on the muscles, tendons, bones, and that additional pressure on these structures can cause the internal force injuries. Then the overuse injuries are very common in the sports. While in sporting activity, every game has its own requirements. हर स्पोर्ट्स, हर गेम में अपनी अपनी खुद की एक जरूरतें होती है और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए बार बार रिपीटेशन में एक ही जो एक्शन की जाती है, एक ही जो क्रिया की जाती है, उससे ओवर यूज इंजुरी होती है. देयर अनएक्सपेक्टेड फोर्सेस, अनएक्सपेक्टेड फोर्सेस में जो है कि बहुत बार हम कहीं अटक जाते हैं, दौड़ते दौड़ते पैरों में पैर फंस जाता है और बहुत बार केमिकल रिएक्शंस हो जाती है या फिर कुछ एन्यूरिज्म जैसे कुछ पार्ट होते हैं कि जिसकी वजह से अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, अचानक पाल्पिटेशन हो जाना, इन कारणों की वजह से भी इंजुरीज हो सकती है. देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंजुरीज कौन सी है. तो आप सभी को पता है एक्यूट और क्रॉनिक होती है, लेकिन हमें स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखना है तो एक्यूट इंजुरीज को क्या कहते हैं कि एक्यूट इंजुरीज ऑकर व्हेन देयर इज अ सडन स्ट्रेस ऑन द बॉडी. जब सडन झटका बॉडी को बैठता है तब एक्यूट इंजुरीज होती है. तो ये क्यों होती है? पहले तो कोलाइजन विद अपोनेंट और ऑब्स्टेकल, किसी चीज से भिड़ जाना या दो प्लेयर्स का आपस में टकरा जाना. देन बीइंग स्ट्रक बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी चीज से दौड़ते दौड़ते अटक के गिर जाना, या कोई स्पोर्टिंग गियर हो या कोई ग्राउंड में अनएक्सपेक्टेडली होने वाली चीज हो जिससे अटक के गिर जाना. और दूसरी बात होती है हाइट से या फिर स्पीड में गिर जाना. तो ये तीनों चीजें कॉमन और मेन तीनों चीजें हैं जिसकी वजह से एक्यूट इंजुरीज होती है. ओके, इसमें एक्यूट एब्डोमिनल पेन जो होगा वो भी कभी कभी किसी पेशेंट्स को आता है, बट इट इज नॉट द anatomical injury, it is a physiological injury because some or the other reason. ओके, बट हाँ अगर उसमें ब्लंट ट्रॉमा है तो वो एक्यूट इंजुरीज में आएगा. देन क्रॉनिक इंजुरीज स्पोर्ट्स के रिलेटेड जब हम देखते हैं, व्हेन वी सी द क्रॉनिक इंजुरीज इन aspect of sports injuries, then the chronic injuries are caused by the continuous stress on the body part over a long time. बहुत टाइम से अगर किसी पेशेंट, किसी स्पोर्ट्समैन का या किसी भी व्यक्ति का अगर पोस्चर गलत है, किसी ने तो भी सवाल भी पूछा क्रैम्पिंग का, तो उसकी वजह से वो जो कंटिन्यूस स्ट्रेस होता है, उस कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से भी क्रॉनिक इंजुरीज होती है. कॉज बाय ट्रेनिंग टू हार्ड, नॉट अलाउइंग टाइम टू रिकवरी, पुअर फुटवेयर एंड बैड टेक्निक. दीज आर मोस्ट कॉमन. अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो लोकल स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो लोकल स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वहां पे इतनी अच्छी ट्रेनिंग टूल्स नहीं होते हैं, इतने अच्छे ट्रेनिंग गियर नहीं होते हैं और कोचेस भी उस लेवल के ट्रेंड नहीं होते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, और काफी सारे स्पोर्ट्समैन, काफी सारे बच्चे
जो कि गरीब तबके से आते हैं, निचले तबके के आते हैं समाज के, उनके पास सही ढंग से पहनने को फुटवेयर नहीं होती है। तो इसकी वजह से भी फुटवेयर एक बहुत बड़ा रीजन है स्पोर्ट इंजरी का, बहुत ही बड़ा। ओवर इंजुरीज ऑकर ड्यू टू द रिपीटेड पावरफुल मसल मूवमेंट्स, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर कोई बॉलर है और बार बार बॉलिंग डाल रहा है एक ही एक्शन में, तो उसको हो सकता है कि उसके कंधे में ओवर यूज इंजुरी जैसे कि सुप्रास्पाइनेटस टेंडोनोसिस या फिर कोई भी टेंडोनोसिस ऑफ द एनी शोल्डर टेंडन कैन हैपन ओवर द रिपीटेड एक्शंस। ओके, देन ओपन इंजुरीज जो होती है वो आपने देखी है कि जो कट्स होती है नॉर्मली, जो फाइटिंग स्पोर्ट्स होते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में कोलाइजन की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट को लगने की वजह से कट्स हो सकते हैं, जिनका ब्लड रोकना हमें बहुत जरूरी होता है। ये ग्रेजेस और एब्जर्शन, जब प्लेयर्स स्लाइड कर जाते हैं, ग्लाइड कर जाते हैं, तो देन द एब्रेजन्स एंड जो स्किन ये होते हैं, उसको ग्रेजेस भी कहा जाता है, कैन हैपन। Then open injuries are the also the two another times are the blistering and the chafing. The chafing यानी एक प्रकार के ऐसी झुर्रियां या निशान बन जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली जांघों में और आर्म पीट के पास। ये बिकॉज ऑफ रॉन्ग क्लोथिंग मटेरियल या फिर कोई इल क्लोथिंग, इल फिटिंग छोटी टी शर्ट या जो टाइट कपड़े पहनने से बहुत ज्यादा इंजुरीज होती है। देन क्लोज इंजुरीज में मेनली जो sprains occur when ligaments and joints are stretched, strain muscle result from the muscle being suddenly and forcefully overstretched। तो मसल इंजुरी जो स्ट्रेन हो गया या फ्रैक्चर या फिर लिगामेंट टीयर, ये सारी क्लोज इंजुरीज है। इनको क्लोज इंजुरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे स्किन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहता है, स्किन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहता है, इसलिए द स्किन इज इंटैक्ट फ्रॉम आउटसाइड, द इंजुरी हैपेंस ओनली into the internal structures like ligament, muscles or the bone fractures। Then dislocations are very common in some of the sports like boxing, then karate, in judo, or any kind of uh, sport. Dislocations are very common. The shoulder dislocation is the most common dislocation injury, then patellar dislocation is another common injury, and also the fracture. So these all injuries can also be categorized in differently, that is the hard and soft tissue injuries. So the hard tissue injuries are the bone injuries, and soft tissue injuries involve damage to skin, muscle, tendons, ligaments or the cartilages. Okay, so you all know that these are the two structures. Now while speaking about the bone injuries can be classified, lead to the bursting and swelling, then pain due to nerve damage can be there, can be a severe unbearable pain can be there. The limb or the area of the body where the break becomes immobile, if the forearm or the tibia ulna or any part of any long bone or a short bone breaks, that particular area becomes the immobile, or there is a severe pain, the unbearable pain a patient or athlete experiences where there is a break. And if it is a bad fracture, then it will obviously look deformed. It will obviously look like the deformity. So basically, in this course, we are less concerning about the hard tissues, because hard tissues most of the times are the fractures. Yes, we are going to discuss the cases of the undisplaced fractures, but I would suggest for the displaced fracture that they should be referred to the orthopedic surgeon, because although we can reduce and we can manage them, but if there is a malformation, if there is a malunion of that particular broken bone, then that will be a punishment for that athlete forever. Then though some of our practitioners, some of our
Ayurveda acharyas do the fracture practice, but I don't do. Very frankly, I manage the undisplaced fracture. I treat them very regularly, and we are also going to discuss them. The most common fracture which I deal with is the stretch fracture of the tibia, which causes when an athlete starts running or start doing heavy workout without proper warm up and proper strength training. Then most of the time, the new runner, the marathon runners got this kind of stretch fractures. These are the linear fractures horizontally to the tibia and sometimes to the fibula also. The most common sign for them are that the patient will tell you that I don't have much pain while walking, standing, or doing my daily work, but as soon as I start running, after 10 15 steps, my leg got blocked or they get stuck. So this is one of the common symptom in the stretch fracture of the tibia, and they can be managed very well with the Asti Sandhana clay in Ayurveda. We are going to see it in the next week in the treatment part of this course. Okay, and now speaking about the soft tissue injuries. Then the open injury means that the skin has been broken, blood is usually escapes. So in soft tissue injuries, the skin is also a soft tissue, and you all know that if there is a cut or the skin is broken, then the blood escapes, and the primary duty is to stop the blood. Then the open injuries include cuts, grazes, blisters, and chapping. So, for the management of this, the you surgical you all must have been acquainted, and you all must have crossed the patient with these kind of injuries like grazes, blisters, and chafing. Then the most important thing or the most important part, which is more difficult, critical, and interesting to treat, is the close injuries of the soft tissues. They will occur beneath the skin. There is no external bleeding. There will be no external deformity. There may be the swelling sometimes, there may be a stiffness, or there may be a tenderness, but there is no discontinuation of the skin, or there is a laceration or cutting of the skin. The close injuries include the bruising, pulse, stretches or pulls, then strains and sprain. So muscle strains and ligament sprains. Now, the more severe type of injuries which can happen during the sports are the unconsciousness. The concussion is the most common cause of unconsciousness while playing the sports. The common causes may be fainting, head injury, heart attack, or stroke, asphyxia, and shock. So, definitely, these kind of injuries, these kind of symptoms should be treated immediately in the ICU with all the life support equipments. So now we got to know that. Just a minute. Okay, sorry that I missed one slide. I forgot to put it. I will tell it orally to you, as you all are very brilliant Vaidyas. So we got to know that there are four major soft tissues which got injured into this sport injury, and not only in sport injury, in every kind of pain, in every kind of anatomical deformity, let it be the arthritis, let it be the ra, let it be any kind of pain, the musculoskeletal pain specifically, we can say that the musculoskeletal pains are related. uh, Soft tissues are the four soft tissues that are muscles, then the fascia, then the ligament, and the tendons. So in this lecture,
in today's lecture we are going to understand the basics of these soft tissues, of these important soft tissues we are going to see. So first most common soft tissue which is heart is the muscle. So what is the role and other types of soft tissues in the sport injuries or any kind of injuries? Are the soft tissue injuries are pretty common. Such injuries are graded according to type and severity. इनकी सीवियरिटी और ग्रेडेशन से ही सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है उसका डायग्नोसिस का पहला स्टेज है कि उनको आप ग्रेडेड करो, उनको क्लासिफाई करो, देन उनकी सीवियरिटी देखो. If you injure a muscle or a tendon, it is called as strain. Injury to the ligament is called as sprain. So these are some common concepts or common what terminologies for the sport injuries or these soft tissue injuries. So the grade 1 means the mild. For an example is a pulled muscle or a tendon. After a day of grading or yard work, fibers may slightly damage. For example, if a person who is not in the practice, he is not working actively, and he is living a sedentary lifestyle, and suddenly if he do the gardening or work, and then on the second day, the slight fibers may be damaged, and the patient may feel the fatigue and pain into the muscles or the soft tissues, and it will be called as a grade 1 or the mild injury. The most the term, a brilliant term in Ayurveda is used for this, that is the Shramajanya Vat. It's called as the Shramajanya Vat, we can say that, which is a grade 1 injury. Then in grade 2 is moderate. There is a partial tearing of fibers. As you all know that the ligaments, tendons, muscles, all are the fibrous, all are formed from the fibrous tissues. And these in grade 2, some of the fibrous tissues got breakdown, and they produce the pain and also obstructs the movement. So if near to a joint, movement may be loose when it is moved in some direction. We are going to see in tomorrow's uh, diagnosis lecture that how to understand this, but just this is the sake of your understanding. There is a partial tearing of the fibers, and if it is near the joint, the movement may be loose when it is moved in some direction. That is, we can say that the laxity in the joint is also called as the instability or laxity in the joint to a some extent. Then the grade 3 or the severe is there is a complete tear or rupture of a it is a serious injury that requires emergency first aid and immediate medical attention. So this is this is how the soft tissues are graded and their severity is measured. Then we are going to see one by one soft tissues, how their structure is, how they perform, or what is their role in the sport injury or our in daily life. कैसे वो करते हैं. तो जो मेजर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जैसे कि हमने अभी तक देखा, दे आर मसल्स, फेशिया, लिगामेंट्स और टेंडॉन्स. सो हम इन चारों को अभी एक एक करके समझते हैं. इनका रोल बॉडी में क्या है, इनको कैसे और इनको डायग्नोस कैसे किया जाए. ओके. सो मसल सबसे पहला जो सॉफ्ट टिश्यू है जो अफेक्ट होता है, एंड विच इज वेरी कॉमन एंड विच इज वेरी sensitive also. The first one is the muscles. So the muscles are engine of the movement. कोई भी मूवमेंट के लिए आपको एक पावर हाउस लगेगा, एक इंजन लगेगा, और मसल्स जो है वो आपकी मूवमेंट की इंजन है. सो दे सराउंड जॉइंट्स प्रोटेक्टिंग देम एंड वर्किंग टुगेदर टू प्रोवाइड द मोशन. जो मोशन होते हैं, जो भी आपको नी मूव करना है या आपको कोई भी जॉइंट अगर मूव करना है,
तो one of the important structure is muscles. तो जब भी वहां पे क्रिया हानि हो किसी भी जॉइंट की, तो लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन हो, so you should first think about the particular extensor or flexor muscles which is obstructing that particular movement of that joint. Okay, so the example for this is building enough muscle strength to support your back while providing the flexibility to easily move in all possible directions is among the goals of the rehab. So if there is a patient with you which is who is having this spasm in his lumbar or low back, and he is unable to move or bend or extend his back towards back. So if these are obstructed, then you should first think of the paraspinal muscles and the muscles superficial, the interstitial muscles of the particular segment of the spine. And while setting the goal, you have to keep in mind that the patient should be gradually treated and then made the strong paraspinal muscles to build a strong paraspinal muscle which will protect the spine from the further degeneration. Then in second example, if you have a spine surgery, your surgeon may have made the incision into the certain muscle for to access the structures during the surgery. Whether you have had an open surgical repair or minimally invasive in spine surgery. In that also muscles got disturbed, then the scar tissue forms, and that scar tissue then obstruct the natural and normal movement of the particular joint or particular body part. Then the third thing is the healing process after the surgical incision into the muscle can be optimized with the Ayurvedic principles and physical therapy. So if there is a patient who has got the post-surgical loss of range of motion, then you must think of using the Ayurvedic principles and Ayurvedic therapies for the rehabilitation of that particular joint or of that particular body part. Then how the muscle strain happens. So you can see that these are the as you can see on the screen, there are three different injuries we are speaking about. The first, in the first picture here, you can see the normal muscles, which is the intact normal muscle. In the second, you can see that the acute myofascial injuries. When there is an acute injury, there is inflammation, there is a breakage. You can see that there is a breakage, cracks in the muscle. Also, there is a swelling around the that particular part, and this is the sign of acute injury. So you can, by saying that, you can understand that when there is an acute injury, the muscles got ruptured, the muscles got torn, or there is a contusion like injury वहां पे कंट्यूजन इंजुरी जैसी इंजुरी रहेगी. देन इन द लास्ट पिक्चर यहाँ आप ये व्हाइटिश पैच जो देख रहे हैं, दिस इज द फाइब्रोसिस, और यू कैन सी दैट द स्कार फॉर्मेशन. और ऐसी इंजुरी होती तब होती है जब देर इज अ ओवर यूज. सो व्हेन द मसल इज ओवर यूज और बार बार कुछ पर्टिकुलर पार्ट और कुछ पर्टिकुलर जो मसल फाइबर से वो ब्रेक होते हैं, एंड दे फॉर्म द स्कार टिश्यू and also the inflammation. After some days, this scar tissue becomes hard and reduces the flexibility of the muscle. So we are also going to understand how to remove this muscle scar or the scar tissues and restore the movement and the regular activities of the athlete or the patient. Okay, then this is we are going to take the one example of each thing. So in this you can see that this is a calf strain. It is also called as the tennis leg. You might heard the tennis elbow. There is also the tennis leg. So you can see that this is the gastrocnemius muscle, and in the first grade 1 injury, you can see that some of the fibers are broken of the gastrocnemius muscles.
And in the second picture, you can see that there is a some little bit larger portion is torn, and hence there is instability. And in third, you can see that in large extent the muscle fibers are broken, or almost the muscle has been completely cut down. So this is called the this is how the muscular injuries happen. So this was the example. Calf strain was the example of muscle injuries. And then how the muscle injuries gradation are done on the basis of tissue damage and the symptoms they produce. So in grade 1, few muscle fibers involved, as we have seen, that not apparent until the conclusion of the activity. Very little swelling and pain only with the activity. So the patient will tell you that I feel no pain or nothing while practicing, but when I come after completing my gaming session or gymming session, then the pain starts after some time. So this is because of the there are some of the muscle fibers which are involved, and because of their inactivity, these muscles or these ligaments get starting calcified, and that calcification leads to the uh, activity very little continue the degeneration or the stiffness in the muscles. Then in grade 2, moderate number of fibers involved with the intact fascia. Here it is fascia is not disturbed, only muscles are disturbed, and what immediately painful and moderately sore to palpation. So that in this case immediate there will be the painful and very tenderness will be there, but then gradually the soreness will decrease only on the palpation, and the patient will not feel any symptoms in his normal activity. तो हमेशा की एक्टिविटी में पेशेंट जो है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब वो हाई परफॉर्मेंस, हम इसका भी एग्जांपल देखेंगे कल वेन डायग्नोसिस. देन ग्रेड 3 में क्या होता है कि मेनी फाइबर्स इन्वॉल्व इन द इनकम्प्लीट फेशियल इंजुरी. जो फेशियल इंजुरी होती है उसमें थोड़ी सा इन्वॉल्व होता है फेशिया, बट पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है, और फाइबर्स जो होते हैं मसल फाइबर्स वो काफी हद तक रप्चर या टूटे हुए होते हैं. सो इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? इमीडिएटली पेनफुल एंड सोर टू द पाल्पेशन. वो हाथ भी लगाओगे आप तो पेशेंट चिल्लाएगा. सो इट वाज सोर टू द पाल्पेशन, और पेशेंट में लिम्प to avoid the pain, severe pain with the flexion versus resistance or the full extension. क्या होगा कि अगर कोई पेशेंट को, हाँ सर, हाँ सर, स्लाइड मूव होत नाहीये. एकदा करा बरं मूव. तर रोल ऑफ मसल अँड अदर टाइप आहे चालू आहे का? हाँ तर रोल ऑफ मसल्स अँड अदर टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू चालू आहे का? नाही नाही झालं, ते तर पुढे गेलं. हा सर, करा ना सर, मूव करा ना एकदा, फॉलो करा ना. मसल्स अँड अदर टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू चालू आहे का? नाही सर, आणखी म्यूट करतो. हम्म म्यूट करा एक मिनिट सर. मसल्सचं आहे सर आता. हाँ मसल्स दिसत आहे.
हाँ सर, हाँ सर. Now are the slides moving? You seen the change slides? Yes, Dr. Raut. Hello. Yes. Okay, there may be a glitch. I will. We are also going to share this slide in the evening after the in the PDF form. Okay. So don't worry about it. Yes. After the in the PDF form. Yeah, in the PDF form we are going to share. Okay. So don't worry about it. Yes. After the in the PDF form. Yeah, in the PDF form we are going to share. So don't worry about it. Okay. Somebody's mic is on. Somebody's mic is on. Please silent it. Someone mic is on. Hello. Okay. No, it's okay. Okay. In the so in grade three, many fibers involve incomplete facial injury and the immediately painful and sore to the palpation. Patient may limp, avoid pain, severe pain with the flexion versus resistance and or full extension. So that when somebody is rising his hand or rising his leg and you resist it from the other side, the pain will increase. So it will show the grade 3 injury into the muscles. Then the complete dislocation of the fibers, dissociation of the fibers and the fascia complete rupture. So this complete rupture, then the immediate severe pain, there may be the ecomycosis below the area and palpable defect. So the ecomycosis defect is like, just a second, it will be seen like this into the previous picture. Okay. Though there is no external, but you will find this kind of hematomatous, which is called as ecomycosis. Then the most important structure which is very much underrated, which is very much ignored while treating, and the Ayurveda has thought a lot about it. The Ayurveda has thought a lot about it, and that is the fascia, which can be uh, compared or considered as a Shleshmadhara Kala, or can be considered as a Mansdhara Kala. Sometimes it can be considered as a Mandara Kala. Sometimes it can be considered as a Shleshmadhara Kala, because Shleshmadhara Kala we also compare it with the synovial fluids in these synovial joints. Okay, so most of the people, most of the time, facial distortion or the facial dissociation is considered as a muscle tear, sometimes ligament problem, sometimes tendon problem. But uh, that's why it is very important to understand the fascia. So, is there any issue again? डॉक्टर प्रियंका हिंदी. हाँ ठीक है मैडम, मैं दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो द फेशिया जो होता है इसको हमको समझना बहुत जरूरी है. चलिए, बहुत देर से मैं अकेला ही बात कर रहा हूं, हम थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं. आप में से कोई बता पाएगा विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी?
Anybody knows which is the largest organ of our body? Please type into the chat box. Dr. Komal ma'am and all are requested, kindly raise your hand. I am going to give the sufficient time after the session. We are having question answer session after this session. So I am going to unmute at that time only. Till then, please. Uh, hmm. Okay. So the second question, which is the second largest organ of the body? Now, till Kalicharan Daundkar sir, after we have closed the answer for the first question, now the second question, which is the second largest organ of our body? Come on, be fast. Deepali madam, your query will be resolved after the session. Liver. Shraddha Joshi ma'am said the fascia. Anyone? Any more? Dr. Chavi, liver. I again request you all, please don't raise your hand. Just put your what you want to say, put in the chat box. We are going to speak one and one after the session. Okay, thank you very much. The liver answer is wrong for both the questions. The answer of the first question, the largest organ of our body is skin, which is given by many of the doctors. The answer given by many doctors correct. It was skin. Dr. Chavi, Dr. Priyanka, Dr. Anuradha, Dr. Komal has the wrong answer. Then Dr. Dipali Mane. Okay, and the second largest organ of our body is the fascia. So the first thing that the largest organ of our body is the skin, and the second largest body organ is fascia. So let's understand the fascia. Then the fascia is another important type of soft tissue that comes into the playing during the sports and rehabilitation therapy. Fascia is a covering that surrounds small muscle fibers bundles and large muscle groups. We are going to see the and understand it in the next image. सो फेशिया जो होता है हमारे बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो कि सर यू हैव ऑलरेडी टाइप एंड सेंड एंड यू आर सेइंग दैट यू आर डॉक्टर जतिंदर, यू आर टाइप एंड सेंड. ओके, सो देन कम्स दी कि फेशिया जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक कवरिंग है जो हर मसल फाइबर को कवर करता है. फिर उस पूरे मसल फाइबर के बंडल को जो बंडल ऑफ मसल फाइबर है उनको भी कवर करता है. और फेशिया का काम क्या है? सो द रोल ऑफ द फेशिया इज, फेशिया हेल्प्स supports the integrity and movement of the muscles. Ideally, fascia fibers glide smoothly. But when you are injured or develop a chronic posture issue, the fascia can thicken. Because the fascia wraps around the muscle, it can be mistaken for the muscle tension when it thickens. Got it? Got it? जैसे कि आपने समझा कि मसल के फेशिया क्या होता है, मसल की कवरिंग होता है, पैकिंग होता है. तो नॉर्मली क्या होता है ना कि वो बहुत ही स्मूथ और स्मूथ ही स्टिकी टाइप का टिश्यू है जो कि इजीली ग्लाइड होता है. लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो गई बिकॉज ऑफ इंजरी, एक्यूट इंजरी या क्रॉनिक इंजरी से, तो वो वहां पे थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है. जैसे कि फेविकॉल हो, फेविस्टिक हो, जो कि नरम रहता है जब तक डब्बे में है, डिब्बे में है, लेकिन जब वो किसी चीज से चिपक जाता है, वो डिस्टेंस हम उसको
डिब्बे से बाहर निकाल के फैला देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है. जस्ट लाइक दैट फेशिया ऑल्सो एक्ट्स. ओके. और वो क्या करता है, फेशिया मसल को हेल्प करता है, मसल को ताकत देता है, उसकी इंटीग्रिटी देता है और मसल को प्रोटेक्ट भी करता है. इट और कितने टाइप का फेशिया होता है वो भी हम देखेंगे. प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द सराउंडिंग टिश्यू, हेल्प टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड प्ले अ सपोर्टिव रोल ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. फेशिया कैन ट्रांसमिट द मैकेनिकल टेंशन जनरेटेड बाय द मस्कुलर एक्टिविटी फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस. जैसे कि हमने पहले शुरुआत में देखा, वी हैव सीन इन द स्टार्टिंग दैट की फेशिया जो है वो किस तरह से ठीक हो सकता है. ठीक कि जब ओवर यूज इंजरी होती है, जब आपको कुछ हिट हो जाता है या फिर एक्सटर्नल फोर्स एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से लगता है, तो फेशिया क्या करता है, शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करता है. सो यू कैन सी कि फेशिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो रैपिंग भी कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, शॉक एब्सॉर्बर भी है और कनेक्टिंग टिश्यू का भी काम कर रहा है. सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट फेशिया. और इस फेशिया के रिलीज के लिए और इस फेशिया के न्यूट्रिशन के लिए ही आयुर्वेद में अभ्यंग और स्नेहन स्वेदन का इंपॉर्टेंस बताया गया है. अभ्यंग का महत्व, स्नेहन का महत्व जो भी जितना विशद आयुर्वेद में किया गया है, और ये दोनों चीजें जो है वो एक्ट करती है आपके फेशिया पे, जिसको बहुत बार मायोफेशिया भी कहा जाता है. ओके. मायो मीन्स मसल एंड फेशिया मीन्स फेशिया. सो द फेशिया विच इज कवरिंग द मसल इज कॉल्ड एज अ मायोफेशिया. So let's see the how the fascia is located in our body. So ये एक इलुस्ट्रेटिव पिक्चर है. स्लाइड चेंज हुई ना अभी? Is the picture visible? So if you can see that there is a super on the topmost top of the picture, you can see that there is a skin. So below the skin, exactly below the skin, you can see the superficial adipose tissue and the reticula cutis of the superficial reticula cutis superficialis. आपको एक बात और बोल दो कि ये जो रेटिनाक्यूला क्यूटिस है, दिस इज वन अगेन वन ऑफ द फेशिया, एक्सटेंडेड फेशिया. देन सुपरफेशियल फेशिया, फिर डीप एडिपोज टिश्यू, उसके बाद में फिर मल्टीलेयर स्ट्रक्चर ऑफ द डीप फेशिया एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उसके अंदर फिर मसल होता है. सो दिस इज हाउ द फेशिया सिचुएटेड एट मल्टीपल लेवल्स इन दी or the beneath the skin, and this is how the skin is protected from the fascia. Okay, now let's see that how actually it looks like. So you can see in this picture, you can see in this picture that this is the bone. Okay, and this bone is connected with this tendon, which is connected with the muscle, and this whitish thin line is the fascia. Then there is a muscle fiber or the muscle bundle, and in this muscle bundle there are the fibers of the muscles, you can see, and that each fiber is covered by the fascia. You can see that the bundle in the fiber are again, the bundles of the fibers are again covered with the fascia. So this is the deep fascia, this is the interstitial fascia, and this is the superficial fascia, which is covering the muscles in the 2-3 layers. So this is how the fascia is covered. Fascia covers all the muscles, and hence it is called as a myofascia. Now let's see the dissection image. So this is the dissection image. This is the actual dissection image of the
fascia. You can see that how that fascia is been separated from the muscle in this particular dissection of the forearm in the fresh skin. You can see. Now, during dissection, you may have seen this kind of layer, and this kind of scapping we have done during our college days during first year. And this white connective or this white sticky layer was the fascia. Then how this fascia is situated in our body. So this is how the fascia is situated in our body. All the white part in this picture, all the white part in this picture is the facial lining. So you can see that the fascia is covered almost everywhere by the body. Almost everywhere. This is from the temporal, sorry, this is from the cranial fascia, the thoracolumbar fascia, the abdominal fascia, the lower limb fascia. These are the this is how the fascia covers all the muscles in our body. Now, the most common fascia which got disturbed are the cranial fascia. This is the IT band, which is a thick band of the tendon, which is covered with the uh, which is been attached to the muscle, which is called. Anybody can tell me that which muscle the IT band or the iliotibial band is attached? Let's make it somewhat interactive. Tell me the muscle which is here, from where the tendon called IT band, that is iliotibial band, iliacus. No, madam. Tensor fascia lata is a very correct answer, Dipali madam. Very good. Tensor fascia lata is the correct answer, which is very important while treating the hip joint, while treating the deformities of the hip joint. Then the thoracolumbar fascia, the quadriceps fascia, the fascia between the fascia between the scapular linings. Also, there is a different kind of fascia which is called as retinacula. Actually, it is anatomically retinacula are described differently from the fascia, but though they are the thick layer of the fascia only, so these are more commonly seen into the injuries which happen to the ankle and the knee. So the retinacula is basically a thickened deep fascia around the tendon, and that holds them into the place. Like fascia, there's like myofascia is the fascia which holds the muscles, and retinaculum is a band of thickened deep fascia which surrounds the tendons and holds them in the place and don't allow them to be dislocated. So this is how the fascia is important. In manual therapy, in the massage therapy, or in chiropractic, in osteopathy, there is a technique which they follow. In also in acupuncture, acupressure, they follow the planes of the fascia. All the meridians which are been explained in acupuncture, acupressure, sujog, and all other manual therapies, they are basically the planes of fascia which are defined as apart from those covering the various structures as muscle, tendon, bursa, vessels, ligament, joints, and bone. Two large systems of the fascia occur, one subcutaneous and other the subserous. So ये जो fascia हमने अभी तक देखा था, इससे ये थोड़ी सी अलग एक्सप्लेन की जाती है। ये हमें ऐसा
माना जाता है कि जो ये प्लेन्स है, फेशियल प्लेन्स, ये बॉडी को यूनाइट रखने में, स्ट्रक्चर्ड रखने में हेल्प करते हैं। जब भी कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी आती है, जब भी कोई ऐसी डिफॉर्मिटी आती है, तो सब ये जो फेशियल प्लेन्स है ये डिस्टर्ब होते हैं, या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इन्हीं फेशियल प्लेन्स को हम फॉलो करें तो हम वो डिफॉर्मिटी सही कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी बहुत बार, बहुत जगह स्नेहन और मर्दन में अगर आप देखोगे तो स्नेहन मर्दन जो है वो बेसिकली फेशिया को ही ट्रीट करता है। इसीलिए आयुर्वेद में स्पेसिफिक टाइप से, स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्नेहन करने के लिए कहा गया है, मर्दन करने के लिए कहा गया है। सो दिस इज हाउ फेशिया वर्क्स। देन हम आते हैं लिगामेंट्स और टेंडॉन्स पे। सो द लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स पे जो होती है, ये दोनों भी फाइब्रस टिश्यूज है। वन मोर टाइम, तो बेसिकली क्या फर्क है लिगामेंट और टेंडॉन में, जिसको हम आयुर्वेद में शीरा और कंडरा भी कहते हैं। लिगामेंट्स आर कॉल्ड एज शीरा एंड टेंडॉन्स आर कॉल्ड एज अ कंडरा। तो हम ligaments are tough band of the connective tissue that strap the bones of a joint together. Because they cross the joints, they help prevent excessive potentially harmful movements. So the ligaments क्या होती है कि जो दो बोन्स को एक दूसरे से जोड़े रखती है। Just a minute. For your understanding, I will stop this presenting for a while. So if हम अभी मेरे पास फिलहाल नी का मॉडल है, तो जो लिगामेंट्स जो होती है, जैसे ये LCL है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स, इसने लेटरली, सॉरी ये MCL है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, जिसने मीडियली फीमर और टिबिया को जोड़ रखा है। वैसे ही ये LCL है जिसने, सॉरी लिगामेंट है जिससे उसको फीमर से फिब्यूला को जोड़ रखा है। उसी तरह ACL जिसने अंदर से जोड़ रखा है। सो हाउ दिस इज हाउ डिफरेंट ligaments act to stabilize the joint. This is a very interesting ligament because this is also called as a patellar ligament. This is also called as a patellar tendon because it do the both, because it is a continuation of quadriceps tendon and it is attaching the bone with the, that it is attaching the femur with the patella and patella with the tibia. So it is also called as tibial ligament or tibial tendon. This is the only example in our body. Okay, now again let's move. Okay, then the tendon are the structures made up of similar type of connective tissues, but they attach muscles to the bone. When a muscle contracts, it uh, tugs on to the tendon that arises from it, and the tendon moves the bone to which it is attached. जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा था कि मसल्स आर द इंजन ऑफ द मूवमेंट। तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो लिगामेंट को खींचेगी एंड देन द जॉइंट विल मूव, वो बोन को खींचेगी। तो इस तरह से टेंडन मूवमेंट पे हेल्प करते हैं। सो बेसिकली आसान शब्दों में लिगामेंट वो है जो बोन से बोन को जोड़ते हैं और टेंडन वो है जो मसल को बोन से जोड़ते हैं। सो दे बोथ अटैचेस टू दी बोन। देन जो ये है स्ट्रेन और स्प्रेन में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है।
I have seen lots of doctors and practitioners who have been confused in calling strain and sprain. बोलते मेरे मसल में sprain आ गया, but muscle is not a came into the sprain doesn't happen into the muscle, it happens into the ligament. So what are the basic differences? We will see quickly. That is, what is a strain? A strain is a stretch or a tear or a rip in the muscle belly or a tendon. Muscle strain tend to occur at the junction between the muscle belly and its tendon. So you have to understand, you can see in the below that the most of this time the strain happens near the tendon, where tendon meets the muscle. And the muscle is a soft tissue composed of contractile cell and that affect the movement. So जो मसल्स होती है वो इलास्टिक भी होती है और उसके जो फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, लाइक इलास्टिक होते हैं, इसलिए इलास्टिक बैंड से भी बहुत बार मसल्स को कंपेयर किया जाता है. These injuries are usually caused by excessive force or tension within the muscle fibers. Tensile forces are produced when the muscle is stretched beyond the normal range of the motion, causing the fibers to tear. Example includes the quadriceps strain, hamstring strain, and the bicep strain. 3 degrees of the strain, which we have seen earlier also, and we are going to see into the next slide. लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि जब भी लिगामेंट्स स्ट्रेन होगा, जब भी लिगामेंट पुल होगा, लिगामेंट सॉरी when there is a muscle pull, muscle strain या टेंडन स्ट्रेन या स्ट्रेन होगा, तो क्या होगा, दैट मसल वो हमेशा इंटरनल फोर्स की वजह से ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है या कोई बहुत ज्यादा वेट उठा रहा है या बहुत ज्यादा इंटरनल मसल पे और मसल बेली पे स्ट्रेस आ रहा है, तो ही ज्यादातर चांसेस है स्ट्रेन होने के. ट्रॉमेटिक चांसेस कम होते हैं. ओके, बिकॉज मसल आर वेरी फ्लेक्सिबल. देन स्प्रेन क्या होता है? तो द स्प्रेन इज अ स्ट्रेच, टीयर और अ रीप इन अ लिगामेंट और अ जॉइंट कैप्सूल. Ligament are sheets or the bundles of the collagen fibers that form a connection between two bones. These injuries occur when a joint is forced beyond its normal anatomical limit, resulting in the stretching or tearing of the ligaments, joint capsule, or both. The injuries to the ligaments directly affect the joint stability during the movement. And muscles include, the examples include ACL, MCL, LCL sprains, ankle sprains, shoulder sprains. All we are going to see in our coming lectures. Also, it has been graded into the 3 types, that is first grade, second grade, third grade. So basically जब ligament sprain होता है तो वो उस वक्त होता है कि जब beyond लिमिट के वो स्ट्रेच होता है. बहुत बार खेलते खेलते एसीएल टीयर या एसीएल स्प्रेन आप लोगों ने काफी कॉमन आपकी प्रैक्टिस में भी देखा होगा. काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर एसीएल के लिए क्या करना चाहिए, पीसीएल के लिए क्या करना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस entire course that what will or what can we do for these ligaments. Okay, then the common ligament injuries कौन सी है? Knee ligament injuries, ACL tear, MCL tear, LCL sprain, ankle ligament injuries such as ankle sprain, shoulder ligament में shoulder डिसलोकेशन, ये भी एक लिगामेंट से रिलेटेड है, बिकॉज वहां की लिगामेंट जो है वो लूज हो जाती है. द लिगामेंट्स लूज देयर इंटीग्रिटी, लूज देयर फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, wrist and hand ligament injuries such as finger sprain और thumb sprain, और ट्रिगर थंब भी इसी कैटेगरी में आता है. देन स्पाइनल लिगामेंट इंजुरीज सच एज नेक स्पैज्म और नेक स्प्रेन. बहुत बार जो हम नेक स्पैन बहुत बार नेक स्पैज्म बोला जाता है. बहुत बार एक्सरे में भी आता है कि देयर इज अ स्पैज्म, बट बहुत बार वो नेक स्प्रेन होता है. जो लिगामेंट्स होती है स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल की, वो पुल हो जाती है. ओके, सो द कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं इसका, दैट इज द एसीएल टीयर. आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एवल्जन हुआ है. देन ये पहले जो आप आपकी राइट पे देख पा रहे हैं,
जहां पे एरो है ऊपर, ये पूरा इंटैक्ट एसीएल है। ऊपर के पिक्चर में आप देख सकते हैं ये पार्शियल लिगामेंट टीयर है और ये कंप्लीट लिगामेंट टीयर है। सो दिस इज हाउ द ग्रेडेशन भी आप इसका कर सकते हैं। तो एक्चुअली इस पिक्चर में पार्शियल और कंप्लीट यानी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दिखाया गया है। ग्रेड 1 क्या होता है कि वहां पर, सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस इमेज। तो नॉर्मल लिगामेंट जो कि एक इंटैक्ट दिख रहा है, देन स्ट्रेचिंग और स्मॉल स्ट्रेसेस उसमें आ जाते हैं। इज विजिबल टू ऑल? The slides are moving properly, na? Are you able to see the slides properly? Somebody please type Y into the chat box if yes, and N. Okay, thank you, Dr. Savita. So in this picture, you can see and understand that how the gradation are done. Also, we will see that what are the terminologies commonly used in MRI. Just I think that I know that today's lecture has some stretch out, but please bear with me. It is going to be very knowledgeable. So the grade 1, you can see that there are small tiny tears in this particular structure, which is considered as a grade 1. In grade 2, you can see that there are partially tear, but to a large extent, some compared to the in grade 1. So this is called the larger or the grade 2, and in grade 3 there is a complete rupture or more than 75% tear can also be considered as a complete tear. Okay, then why and how these gradation are being explained. So mild to minor tearing of the ligament fibers and no demonstrable increase in the translation of the translation on the examine. In simple language में बोला जाए तो लिगामेंट में उस जॉइंट में इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। सो वो जो लॉस ऑफ इंस्टेबिलिटी है, लेकिन पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा। सो इट इज, हम क्लिनिकली उसको ग्रेड 1 बोल सकते हैं। ग्रेड 2 में मॉडरेट पार्शियल टीयर होता है, लिगामेंट विदाउट कंप्लीट डिस्ट्रप्शन, लिगामेंट पूरी से डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन देयर इज इंक्रीज्ड ट्रांसलेशन अपॉन द एग्जामिनेशन। तो जो जॉइंट स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, वो जॉइंट थोड़ा सा हाइपर मोबाइल लगेगा आपको, थोड़ा सा लैक्सिक लगेगा, थोड़ा सा लैक्सिटी उसकी बढ़ जाएगी। Okay, in third, it is a severe complete tear of the ligament with the marked increase in the translation of the upon the examination. Joint जो है वो easily move करेगा, अपनी joint space से बाहर आएगी bone, and this is considered as a grade 3. तो MRI में क्या findings आएंगे? Normally जो grade 0 होता है normal ligament आता है। ग्रेड 1 इंजुरी अगर लिख के आता है, बहुत बार आपने एमआरआई देखा होगा जिसमें लिख के आता है कि ग्रेड 1 इंजुरीज टू द लिगामेंट, तो हमने क्या समझना चाहिए उससे? सो देयर इज अ प्री लिगामेंटस इंजुरी है, लिगामेंट्स का रप्चर नहीं है लेकिन प्री लिगामेंटस इंजुरी है विद सुपरफिशियल फ्लूइड कलेक्शन, अब्सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, थिकनिंग एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द लिगामेंट। हो सकता है कि उस लिगामेंट थिकन हो चुका है बिकॉज ऑफ डिजनरेशन, बिकॉज ऑफ नॉर्मली ऑस्टियो आर्थराइटिस और ओल्ड एज पेशेंट में इस टाइप की फाइंडिंग्स आएगी, बिकॉज ऑफ डिजनरेशन वो थिकन हो जाते हैं। ओके, ग्रेड 2 इंजुरी में थिकनिंग ऑफ द लिगामेंट प्रेजेंट रहेगी कंपल्सरीली विद द इंट्रा लिगामेंटस हाइपर इंटेंस सिग्नल इंटेंसिटी
on the T2 weighted image but with the ligament still in continuity. लिगामेंट जो है एमआरआई के फिल्म में भी कंटिन्यू दिखेगा, बट हाइपर इंटेंस उसमें इंटेंसिटी दिखेगी T2 weighted images में. So if this kind of finding you are reading into the MRI report, then you can understand that these all had been happen. और ग्रेड 3 में कंप्लीट रप्चर रहेगा, एमआरआई में भी कंप्लीटली दिखेगा कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो लिगामेंट का जो कंटिन्यू स्ट्रक्चर है वो डिसकंटिन्यू दिखेगा. देन हम इसको अगर कंपेयर करते हैं, इफ वी विल कंपेयर दिस कि कैसा उसका क्लिनिकल प्रेजेंट ये रहेगा, तो समअप अगर हम करते हैं इसको, तो दिस इज कि स्प्रेन या स्ट्रेच जो होती है ग्रेड 1 में, वो लो ग्रेड इंजुरी होगी, जिसमें पेरीलिगामेंटस सिग्नल आउटलाइंग लिगामेंट और इडिमेटस लिगामेंट विथ इंटैक्ट इंटरनल फाइबर्स रहेंगे. यानी इडिमा दिखेगा, वहां पे फ्लूइड कलेक्शन दिखेगा, माइल्ड फ्लूइड कलेक्शन दिखेगा, बट जो लिगामेंट्स है वो इंटैक्ट दिखेंगे. और फाइबर कैसे रहेंगे उसके? इंटैक्ट फाइबर रहेंगे, फाइबर्स उसकी डिस्टर्ब नहीं लगेंगे. उसमें लिगामेंट का कैलिबर कैसे रहेगा? तो नॉर्मल रहेगा, और या तो अगर ओल्ड एज में है या फिर क्रॉनिक है तो देन थिकन लगेगा, लेकिन वो फाइबर जो है वो इंटैक्ट रहेगी. टेंशन ठीक रहेगा, बहुत ऐसा ये, और एवल्जन फ्रैगमेंट तो रहेगा ही नहीं. ओके, पार्शियल टीयर में क्या रहेगा कि मॉडरेट ग्रेड इंजुरी रहेगा, लो ग्रेड पार्शियल जैसा मैंने बताया कि वो लेस देन 50% रहता है, और हाई ग्रेड पार्शियल या सेकंड बी जो बोल सकते हैं उसको हम, हाई ग्रेड पार्शियल, दैट इज दी 50% से ऊपर रहेगा, जिसमें बहुत बार ऐसा लगता है कि लिख के आता है पोटेंशियल लार्ज ग्रेड टीयर, चाहे वो एसीएल हो, मसल एसीएल का हो या शोल्डर का हो या किसी और में. तो लार्ज ग्रेड टीयर जब लिखा के आता है तो देन डेफिनेटली इट इज मोर देन 50%. और इंटरनल फ्लूइड इंटेंसिटी एक्सटेंडिंग पार्शियली अक्रॉस द लिगामेंट, पूरा पार्शियली जो ये रहेगा पूरे अक्रॉस द लिगामेंट, कुछ साइड में इंटरनल फ्लूइड रहेगा ही रहेगा, और जो फाइबर्स रहेंगे वो इनकम्प्लीट रहेंगे. डिसरप्शन जो है वो पूरा नहीं रहेगा, कहीं टूटे हुए, कहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, कहीं ब्लैक दिखेगा, कहीं व्हाइट दिखेगा, ऐसा पूरा ब्लैक है पूरा व्हाइट नहीं दिखेगा एमआरआई में. थिकन और थीन लिगामेंट, ये दोनों भी हो सकते हैं लिगामेंट कैलिबर में. अगर वो इंजुरी से है, अगर टीयर से बना है, तो देन इट विल बी थिकन लिगामेंट, या तो फिर सॉरी इट विल बी थीन, पतला हो जाएगा. और अगर वो डिजनरेशन की वजह से हुआ है, डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, तो थिक हो जाएगा. देन टेंशन जो रहेगा वो पार्शियली लॉस होगा टेंशन, जिसकी वजह से आपको जॉइंट में लैक्सिटी मिलेगी, और एवल्जन फ्रैगमेंट या टुकड़ा उसका अलग दिखेगा, ये पॉसिबल है. और थिकन एडिमेटस लिगामेंट ये एक्यूट स्टेज में रहेगा, यानी अगर अभी अभी लिगामेंट इंजुरी हुई है तो थिक भी दिखेगा उसमें, और लिगामेंट में इडिमा भी दिखेगा. ओके, और कंप्लीट टीयर में फ्लूइड गैप एक्सटेंडिंग कंप्लीट अक्रॉस द लिगामेंट, थिकन लिगामेंट फाइबर भी मोटे दिखेंगे, और जो लिक्विड है वो पूरा दिखेगा, यानी पूरा व्हाइट दिखेगा या पूरा ब्लैक दिखेगा दो एंड्स के बीच में. कंप्लीट फाइबर डिस्क्रिप्शन दिखेगा कंटिन्यू की फाइबर्स दोनों जो उसके छोर है वो टूट चुके हैं, अलग दो छोर दिखेंगे. और अपसेट लिगामेंट फाइबर एट द टीयर साइड, जहां पे टीयर है वहां पे आपको फाइबर दिखेगा नहीं. देन कंप्लीट लॉस ऑफ टेंशन विथ रिट्रैक्शन, जैसा हो सकता है कि वो डिफॉर्मिटी भी दिखे वहां पे जॉइंट में, क्योंकि स्पेशली जब नी की बात कहा जाए तो हो सकता है कि हाइपर मोबाइल नी दिखे, एक्सटेंडेड नी दिखे, और एवल्जन फ्रैगमेंट पॉसिबल है इसमें, और थिकन इडिमेटस लिगामेंट भी दिखेगा ही दिखेगा. सो दिस इज हाउ हम लिगामेंट इंजुरीज को समझ सकते हैं, लिगामेंट इंजुरीज एक्चुअल क्या होती है. तो इससे हम उससे ग्रेडेशन से और उससे सीवियरिटी से हम एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान उसके लिए बना सकते हैं. देन फिजिकल फाइंडिंग कैसे करना है, फिजिकली कैसे समझना है कि इट इज अ लिगामेंट टीयर. तो ग्रेड 1 टीयर जब भी रहेगा
तो वो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि स्ट्रेच लिगामेंट रहेगा, माइक्रोस्कोपिक टीयर्स उसमें रहेंगे, छोटे छोटे टीयर्स रहेंगे, माइक्रोस्कोपिक टीयरिंग नहीं रहेगी। तो क्या होगा, जो भी साइड है, फॉर एग्जांपल नी है या शोल्डर है या फिर सेकंड इज आवर टेनिस एल्बो, यानी सॉरी एल्बो जॉइंट है, तो यहाँ पे माइनर स्वेलिंग रहेगा लेकिन जॉइंट इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। पेन होगा, मूवमेंट में पेन होगा, दर्द होगा, लेकिन जॉइंट में इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। देन ग्रेड 2 में पार्शियल टीयरिंग होती है, हमको पता है। तो इसमें क्या लक्षण दिखेंगे, माइनर टू मॉडरेट स्वेलिंग रहेगी, थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी रह सकती है, और एंकल भी अफेक्ट हो सकता है। यानी तो यहाँ पे हम नी के बारे में सोचते हैं बहुत बार, तो बहुत बार एंकल में भी डिफॉर्मिटी आई हुई मिलेगी अगर नी का हम सोच रहे तो। देन ग्रेड 3 है कि इन्वॉल्व कंप्लीट रप्चर ऑफ लिगामेंट, इसमें कंप्लीट रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग, बहुत ज्यादा टेंडरनेस रहेगा, उस पे स्किन डिस्कलरेशन भी आ सकता है, और इनस्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट तो 100% रहेगी। जॉइंट वेट बेयर कर ही नहीं सकता है, तो वेट बेयरिंग उसमें जीरो रहेगी। सो पेशेंट अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं रह पाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सी दी लिगामेंट इंजुरीज। अब हमको इसे आयुर्वेद के हिसाब से हमको भगना, और इसमें इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि भगना चिकित्सा के लिए भी हमको इन सारी बातों को समझना पड़ेगा कि क्या वहां भग्न है, क्या वहां पे सिर्फ शोथ है, तोद है, या भग्न है। तो ये समझने के लिए, और आयुर्वेद जो प्रिंसिपल्स है या आयुर्वेद प्रोटोकॉल जो सेट करने हैं हमें ट्रीटमेंट के लिए, वो तो हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ और बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा कि मैंने कहा कि शीरा और कंडरा, इनसे कंपेयर किया जाता है या इनसे कोरिलेट किया जाता है लिगामेंट और टेंडन को, तो हमें रक्त से संबंधित चिकित्सा इसमें करनी होती है। हम वो सारी चीजें हमारे ट्रीटमेंट पार्ट में कवर करेंगे। नाउ टेंडन की तरफ आते हैं। तो टेंडन की कौन सी कॉमन इंजुरीज है, तो टेनिस एल्बो इज द टेंडन इंजुरीज, उससे लिए उसको लैटरल एपिकोंडालाइटिस बोलते हैं। देन गोल्फर्स एल्बो जो मीडियल एपिकोंडालाइटिस होता है, एग्जैक्टली जो टेनिस एल्बो होता है वो लैटरली होता है, और गोल्फर्स एल्बो जो होता है वो मीडियली होता है। देन अकिलिस टेंडनाइटिस और रिस्ट टेंडनाइटिस, दीज आर दी मोस्ट कॉमन टेंडन प्रॉब्लम जो स्पोर्ट्समैन भी ये करते हैं। और मैंने आजकल बहुत ज्यादा देखा है कि जो वर्किंग वुमेन्स है, स्पेशली जो आईटी सेक्टर्स में है या हाउसवाइफ भी है, लेकिन स्पेशली यंग वुमेन्स में टेनिस एल्बो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसके साथ ही हम जैसे मसल को हमने देखा कि मसल की इंजुरी और उसका रप्चर, तो टेंडन रप्चर भी होते हैं। सो मोस्ट कॉमन जो टेंडन रप्चर होते हैं या रप्चर इंजुरीज होती है वो कौन सी होती है, तो क्वाड्रिसेप। दिस इज वेरी कॉमन इन रनिंग, जो रनिंग करते हैं या खेलते हैं। अगर आप में से कुछ लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे तो आपको सब पता होगा कि जो अभी लखनऊ सुपर जायंट के कैप्टन है और इंडिया के स्टार बैट्समैन केएल राहुल, ये अभी सर्जरी के बाद वापस आए हैं। तो इनका हैमस्ट्रिंग जो है रप्चर हुआ था, तो हैमस्ट्रिंग टेंडन रप्चर हुआ था और हैमस्ट्रिंग का ऑपरेट उन्हें करना पड़ा। ओके, सो अ ग्रुप ऑफ फोर मसल क्वाड्रिसेप्स, आपको पता ही है कि अ ग्रुप ऑफ फोर मसल्स दैट कम टुगेदर जस्ट अबाउट द नी, that is the kneecap, that is the patella, to form the patellar tendon। और वो पटेलर टेंडन बनाते हैं जो चार मसल्स हैं हमारी, हम जिनको जांग या थाई बोलते हैं, हमारी थाई की जो फ्रंट फोर मसल्स है, दैट कॉमनली कॉल्ड एज अ क्वाड्रिसेप मसल्स। उसके बाद में अकेलिस टेंडन जो है, ये टेंडन भी रप्चर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा केसेस देखा है। इंजरी में, एक्सीडेंट्स में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में अकिलिस टेंडन रप्चर एक कॉमन देखा गया है। स्पोर्ट्स में भी अगर आपको अकिलिस टेंडन के आजू बाजू या अकिलिस टेंडन पे कोई इंजरी हो जाती है तो वो रप्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे
और जब सिर्फ पैरालाइज करना होता था सैनिकों, जहां मारने का उद्देश्य नहीं, तो वहां पे ये जो पुराने योद्धा थे, ये उनकी अकेले टेंडन को कट कर देते थे। और तो वो अकेले टेंडन को इसलिए कट कर देते थे, और जो घुड़सवारी भी उसमें बहुत ज्यादा जो घड़सार थे, उनके भी ये अकेलेस टेंडन रप्चर हुआ करते थे, कि अगर अकेलेस टेंडन रप्चर हो गया तो आप खड़े ही नहीं हो पाओगे, आपका फुट ड्रॉप हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। और रोटेटर कफ, तो रोटेटर कफ जो है ये शोल्डर का एक ग्रुप है 4 मसल्स का, जो कि रोटेटर कफ इंजुरी जो भी गेम में कंधा बहुत यूज होता है, जैसा बॉक्सिंग है, कराटे है, उसके बाद में बैडमिंटन है, टेनिस है, क्रिकेट में भी बहुत सारे इसमें रोटेटर कफ इंजुरीज आर वेरी कॉमन इंजुरी टाइप इन द स्पोर्ट इंजुरीज। और बाइसेप रप्चर्स भी हमको देखने को मिलते हैं बहुत बार, स्पेशली जिम फ्रिक्स में, जो लोग जिम में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं और अपनी मसल जल्दी बिल्ड करने के चक्कर में ज्यादा वजन उठा लेते हैं। बिकॉज बाइसेप मसल क्या करती है कि फ्लेक्स करती है आपके फोर आर्म को, और फ्लेक्शन के दौरान अगर आप कोई बहुत ज्यादा हेवी वेट उठा लेते हो तो देन बाइसेप जो है रप्चर हो सकता है, बाइसेप टेंडन। सो द मोस्ट कॉमन टेंडन जो मैंने अभी बताया, या टेंडन इंजुरीज जो होती है, वो होती है एंकल में। और जैसा मैंने कहा कि अकेलिस टेंडन का प्रॉब्लम नॉर्मली होता है। अभी इसको हम क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं अकेलिस टेंडन में, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, ये कहीं पर भी हो सकता है, बट द मोस्ट कॉमन साइट को हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। सो दिस इज द इन द अबव पिक्चर यू कैन सी द नॉर्मल अकेलिस टेंडन। राइट साइड में आप देखोगे तो टाइनी टीयर्स है, सो इसको हम बोलते हैं टेंडिनोसिस। टेंडिनोसिस का मतलब होता है स्वेलिंग आना। बहुत सी बार दिस टेंडिनोसिस इज द कॉज ऑफ द हिल पेन। बहुत सारे पेशेंट्स को हिल पेन होता है और उसका एक्चुअल डिजीज जो होता है वो टेंडिनोसिस होता है। और मोस्ट कॉमनली जो ट्यूबरोसिटी आपको हिल के अबव रहती है, उस ट्यूबरोसिटी पे ये टेंडिनोसिस होता है, बिकॉज ऑफ ओवर यूज या बिकॉज ऑफ दी लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत देर तक खड़े रहने से या फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट से ये टेंडिनोसिस बहुत कॉमन होता है, और इसकी वजह से फिर हील पेन होता है। और फिर बहुत बार हम हील को अलग अलग टाइप से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका रूट कॉज टेंडिनोसिस होता है। देन अगर आप लेफ्ट वाला इमेज देखोगे, लेफ्ट अपर वाला, तो वहां पे है टेंडनाइटिस, उस टेंडन पे सूजन आ जाना। जब टेंडनोसिस बढ़ जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, स्पेशली रनर्स नी में, और बहुत बार बिकॉज ऑफ रॉन्ग फुटवेयर, बिकॉज ऑफ हार्ड कोर या एक्स्ट्रा फ्रिक्शन एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर में होने की वजह से वहां पे टेंडनाइटिस हो जाता है। और सबसे बिलो जो हमने देखा कि टेंडन रप्चर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लेक्शन है, डॉर्सी फ्लेक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है एंकल का। तो कॉमन टेंडन प्रॉब्लम क्या होते हैं, तो पहली बात होती है, एक होता है सूडो टेंडनाइटिस, जिसमें बहुत कम स्वेलिंग होता है, और वो थोड़ा सा वहां पे स्पर्शासहत्व हो जाता है, टेंडरनेस हो जाता है, सोरनेस और पाल्पेशन होता है, लेकिन वो ट्रू टेंडनाइटिस नहीं होता है। जब ट्रू टेंडनाइटिस होता है तो इट इज एसोसिएटेड विद द एक्यूट इंक्रीज इन एक्टिविटी। पहले तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ एक ये मिलेगा कि कुछ तो भी एक्यूटली ओवर यूज इंजरी किया है, यानी बहुत ज्यादा खेल लिया, बहुत ज्यादा ड्राइविंग कर लिया। इट इज ऑल्सो कॉमन इन जो ड्राइवर्स, अगर बहुत ज्यादा कंटिन्यू ड्राइविंग कर लिया तो भी ट्रू टेंडनाइटिस या टेंडनाइटिस हो सकता है, जनरली राइट लेग में, क्योंकि वहां पर एक्सीलेटर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस उस पर रहने की वजह से टेंडनाइटिस वहां हो सकता है। पटेलर टेंडनाइटिस विथ हिल रनिंग, अगर कोई क्लाइंबर है, क्लाइंबिंग कर रहा है, तो उसको टेंडिनाइटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन टेंडिनोसिस इज द कॉमन एंड मिसडायग्नोस एज अ टेंडिनाइटिस, जैसे कि मैंने पहले बताया
कि टेंडनाइटिस और टेंडिनोसिस दोनों अलग है, क्योंकि अ क्रॉनिक डिजनरेशन ऑफ टेंडन इज अ टेंडोनोसिस। तो क्रॉनिक टेंडोनोसिस क्या होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है टेनिस एल्बो। किसी ने तो भी पिछली इसमें बोला भी था कि हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं टेनिस एल्बो के लिए। बट आपको टेनिस एल्बो के लिए पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज टेनिस एल्बो। सो द टेनिस एल्बो इज अ कॉमन डिजनरेशन। तो वहां पे डिजनरेशन भी है, और बहुत सारे लोग केवल अग्निकर्म कर देते हैं, केवल रक्तमोक्षण कर देते हैं। तो अभी हम अगर इसको आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो क्रॉनिक डिजनरेशन है, यानी वहां पे क्षय है। किस चीज का क्षय है, मांस क्षय है। तो आपको वहां पे बृहन चिकित्सा भी करनी पड़ेगी व्हेन यू आर ट्रीटिंग दी। हम आगे देखेंगे। देन टॉर्न टेंडन। टॉर्न टेंडन क्या होता है, कैन ऑकर विद द ट्रॉमा स्पॉन्टेनियसली थ्रू टेंडोनोसिस। एग्जांपल अकेलिस टियर और द रोटेटर कफ टियर। ये ओवर यूज की वजह से भी हो सकता है, जैसा मैंने बताया कि उसमें अगर कंटिन्यूस स्ट्रेच रह रहा है, कंटिन्यूस उस पर प्रेशर रह रहा है, तो धीरे धीरे करके वो उसकी कुछ फाइबर्स टूटेंगे। ओके। देन टेंडिनोपैथी, ये बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा, एक्सरे में भी सुना होगा, एमआरआई में भी लिख के आता है बहुत बार टेंडिनोपैथी। लेकिन इट इज अ जेनरिक टर्म फॉर टेंडन डिसऑर्डर। वो किसी भी डिसऑर्डर के लिए यूज हो सकती है। नॉर्मली वो टेंडनाइटिस और टेंडिनोसिस के लिए यूज होती है। और टेंडन रिलेटेड पेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ व्हाट द क्लिनिशियन नीड्स टू ट्रीट। तो जो टेंडन रिलेटेड पेन होता है उसमें आपको एक इक्विलिब्रियम बिठाना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग लाना पड़ेगा कि पेशेंट क्या बोल रहा है और आप क्या करना चाह रहे हो। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि टेनिस एल्बो है और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे तुरंत राहत चाहिए। आप अग्निकर्मा कर देते हो, आप रक्तमोक्षण कर देते हो, आप वेदन कर्मा कर देते हो और पेशेंट को तुरंत ठीक लगता है। लेकिन क्या है कि मैंने पहले ही आपको बताया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि स्पोर्ट इंजरी मैनेज करना यानी सिर्फ इंस्टेंट पेन कम करना नहीं होता है। इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्पोर्ट इंजरी मैनेजमेंट। आपको दोनों चीज करना पड़ेगा, आपको उसका एक्यूटली पेन कम करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू मैनेज ऑल्सो। So for that management and for that reduction in pain, you have to understand this relation between the pain of the tendon. Okay, now let's see कि टेंडन की जो ग्रेडेशन है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, उसमें हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या उसका डिस्क्रिप्शन होता है, यानी उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो द माइल्ड जब होता है, ग्रेड 1 जो है, तो वो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द टेंडन होता है विदाउट टीयर और लॉस ऑफ फंक्शन। यानी सिर्फ खिंचाव उसमें आ जाता है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं आता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन जो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ, जो एमआरआई में दिखेगा वो सिंपल स्ट्रेच दिखेगा, थिकनिंग दिखेगा, इन्फ्लामेशन वहां पे रह सकती है, मिनिमल स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट जैसे, क्योंकि स्ट्रक्चर ये नहीं होता है, और माइक्रोस्कोपिक टीयर्स में भी देयर कि छोटे छोटे जो इन बिटवीन द इंट्रा फाइबरस थोड़े से टीयर्स वहां पे हो सकते हैं। लेकिन वहां पे ऑब्वियस फाइबर का जो आर्किटेक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा, वो इंटैक्ट रहेगा। देन मॉडरेट, द जनरली कंटिन्यूटी ऑफ द टेंडन इज इंटैक्ट दो इट इज स्ट्रेंथ इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। यानी उसमें टेंडन तो रहेगा लेकिन उसकी ताकत कम हो गई होगी। जैसे कि टेनिस एल्बो में होता है कि पेशेंट कर तो सब लेता है, डिस्ट्रप्शन वहां कुछ नहीं होता है, लेकिन उसकी ताकत कम हो जाती है, वो पेन से लिखने में तकलीफ होती है, कोई चीज उठाने में तकलीफ होती है। तो उसमें क्या होता है कि माइनर फाइबर डिसरप्शन होते हैं, पार्शियल टीयर होता है, लेकिन लीजन जो होता है एक कोर लीजन होता है, एक बड़ा लीजन होता है। माइनर और पार्शियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, लैक्सिटी भी उसको हम बोल सकते हैं। हाइपोइकोइक फाइबर्स हो सकते हैं, यानी अगर वो वहां का इको करते हैं हम, या फिर टू डी इको, सॉरी नॉट टू डी इको, अगर वहां पे हम कलर डॉपलर करते हैं या यूएसजी करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल यूएसजी करते हैं, तो वहां पे हाइपोइकोइक फाइबर्स हमें मिल सकते हैं और वो पेनफुल भी काफी रहेगा। देन तीसरे इसमें तो इट इज अ कंप्लीट डिस्ट्रप्शन और एवल्जन भी रहेगा और टीयरिंग ऑफ द टेंडन भी रह सकता है।
सो द कंप्लीट टीयर रिजल्ट इन द टेंडन डिस्फंक्शन, वो टेंडन काम ही नहीं करेगा, वो पार्ट का मूवमेंट ही बंद हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसका मसल के साथ कनेक्शन ही टूट जाएगा बोन का। देन एमआरआई में क्या फाइंडिंग आएंगे, तो जीरो ग्रेड को हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल और पैची हाई सिग्नल इन वन और मोर मसल्स। थोड़ा बहुत जीरो ग्रेड है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर स्लाइटली चेंज, स्लाइटली ये आ रहा है, पैची सिग्नल इंटेंसिटी आ रहा है, या फिर जो T2 और T1 इमेजेस है उसमें कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट एंड लाइक छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, तो देन इट इज अ ग्रेड जीरो। ग्रेड वन में जो है वो हाई सिग्नल रहेगा, जो कि क्रॉस सेक्शन मोर देन और लेस 10% के करीब रहेगा। लेंथ जो रहेगी उसकी 5 सेंटीमीटर से छोटी रहेगी, जिसको स्मॉल टीयर बोलते हैं। अगर कोई बोल एमआरआई में लिखता है देयर इज अ स्मॉल टीयर, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो सेक्शन है वो, जो फाइबर का जो कंप्लीट सेक्शन है वो 10% से कम कटा हुआ है, और उसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर से कम है, और फाइबर जो है उसमें 1 सेंटीमीटर से कम डिस्ट्रक्शन हुआ है। ग्रेड टू में यही सारी चीजें, जो सेक्शन है वो 10 to 50% कटा हुआ मिलेगा, और उसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बाद बड़ी, यानी बड़ा टीयर रहेगा, और फाइबर जो आर्किटेक्चर है, फाइबर का डिस्ट्रप्शन जो मिलेगा वो लेस देन 5 सेंटीमीटर मिलेगा। ग्रेड थ्री में क्या मिलेगा, हाई सिग्नल अक्रॉस द सेक्शन, यानी लार्ज टीयर, एक्सटेंसिव टीयर भी इसको बोलते हैं, जो कि मोर देन 50% रहेगा, लेंथ मोर देन 15 सेंटीमीटर रहेगी, और फाइबर का जो आर्किटेक्चरल डिस्ट्रप्शन है वो भी 5 सेंटीमीटर से मोर रहेगा। सो दीज आर द कॉमन फाइंडिंग्स ऑफ द एमआरआई which are been explained into the MRI. And in grade 4 it is obviously a full thickness tear, ऐसा लिख के आएगा, there is a full thickness tear of the ligament, complete discontinuity of the tendon or muscle with the retraction। तो रिट्रैक्टेड ये रहेगा, जॉइंट रहेगा, और वहां पे कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट रहेगी, और कंप्लीट फुल थिकनेस टीयर रहेगा, जिसको सर्जरी हमको करने का काम पड़ेगा या ये पड़ेगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड। सो दिस इज हाउ दी वी कैन अंडरस्टैंड दी findings into MRI regarding the tendons. So then the conclusion of the today's lecture is that the overall condition of your soft tissue can also influence your pain levels, especially when they are out of shape, too tight or overstretched. So this is how the soft tissues work in our body. This is how the soft tissues are function and important in managing the sport injuries or any kind of pain. That's what I was trying to tell you in the starting of this lecture. So friends, thank you all for listening this presentation. So now we will come back. I think that there was a long 1.5 hour presentation regarding, but I want you all to know more about the structures we are dealing with. हम कल डायग्नोसिस भी इसी प्रकार विथ लाइव वीडियोस देखेंगे। होप हम उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे वीडियो के जो साउंड का है, मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज आई थिंक बिकॉज इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस ईयरफोन, तो हम उसको आज करेक्ट कर लेंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है, अब हम जब एनाटॉमिकली आपके पास कोई भी पेशेंट एमआरआई, एक्सरे या कुछ भी लेके आए, तो आपके सामने वो विजन आएगा कि एक्चुअली क्या हुआ है और मुझे क्या करना चाहिए। किसी तो भी महान व्यक्ति ने कहा था, मुझे पता नहीं है, बट एक ये थे कि अगर लोगों को खुश रखना है, अगर लोगों को खुश रखना है तो केवल उनको जो चाहिए वो दे दो, उनको रेडीमेड दे दो। और अगर लोगों को सशक्त बनाना है, उनको अगर पावरफुल बनाना है, तो उनको सिखाओ। तो मेरा यही हमेशा
इंटेंशन रहता है कि रेडीमेड सॉल्यूशन के पीछे मत दौड़िए। हम इन सारे कंसेप्ट को, इन्हीं को हम शीरा कंडरा, कैसे गुण काम करेंगे, कैसे हमारे जो पांचभौतिकत्व कैसा इसमें काम करेगा, कैसा इसमें हमारा धातु सारत्व काम करेगा, कैसे हमारे गुण दोष गुण विपरीत कैसे करेंगे, व्याधि विपरीत चिकित्सा कैसे करेंगे, उसको संधानक चिकित्सा कैसे करेंगे, उसमें शोधन चिकित्सा का क्या महत्व है, ये सारी चीजें आयुर्वेद प्रिंसिपल से हम समझने वाले हैं। लेकिन ये समझने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट जो हम रेगुलरली यूज नहीं करते उन्हें क्लियर करना जरूरी था, इसीलिए पहले लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस फोरम फॉर नेक्स्ट 20 मिनट। तो आपकी जो भी क्वेरीज है आज के सेशन के रिलेटेड, आज की अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड, सो यू ऑल आर ओपन। और इसी के साथ साथ मैं सबसे अपील भी करना चाहूंगा कि दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, सो आई tried my best to deliver it in the both the languages for the understanding of the maximum peoples, for the maximum peoples. Then I also tried to explain it into the very simple way, but still if there are some scope of improvement you can suggest me. The forum is open, you can ask your question through chat box or you can raise your hand if you want to ask the question directly. तो कल के इसमें हम डायग्नोसिस देखेंगे और परसों के इसमें हम बात करेंगे आयुर्वेद प्रिंसिपल्स के बारे में कि कैसे स्पोर्ट इंजरी में आयुर्वेद प्रिंसिपल्स काम करेंगे। ओके, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? एम आई ऑडिबल? Okay, the forum is open. You can ask your question. Or you can also share your experience or share your feedback for the today's lecture. No, madam. ACL injury doesn't come under Asthi Bhagna because it is not a Asthi, it is a Shira. So it is a Shira Bhagna. But as it is a fibrous tissue, you can treat, the treatment is more or less like a Bhagna. But the rehabilitation principles are different. Because bone are static, bone do move and bones are not flexible, but the ACL is a cruciate ligament and that ligament is flexible. So in sport, when we are speaking about particularly about sport injury, we just not need to do the chikitsa for bhagna, and we are not, we can't stop only by unioning it. तो हम उसे सिर्फ जोड़ के या उसकी ट्रीटमेंट या वहां की रुझा कम करके, पेन कम करके नहीं चलेगा, हमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी वापस लानी पड़ेगी सो दैट वो एथलीट या वो पर्सन उसकी नॉर्मल लाइफ ठीक से गुजर कर पाए, उसको नॉर्मल लाइफ में वो ये कर पाए। इसमें हम दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर पार्शियल एसीएल टीयर है या मिनिमल एसीएल टीयर है तो हम उसको बहुत अच्छे से आयुर्वेद से मैनेज कर सकते हैं। अगर उसको सर्जरी की जरूरत पड़ी तो पोस्ट सर्जिकली भी हम उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सर एलोपैथी को बहुत ही अच्छा सवाल है सर कि एलोपैथी को छोड़कर हमारे पास क्यों आएंगे
पेशेंट हम उनको कैसे कन्विंस करें कि आयुर्वेदा भी काम करता है इंजरी में। सर देखिए, द रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। मैं जब आया था अकोला में 2017-16 में, मैंने मेरी प्रैक्टिस चालू की और मैं जाता था ग्राउंड पे खेलने, एक जिम में जाता था वर्कआउट करने। तो वहां पे एक बेसिक रिस्पेक्ट तो आपको होता ही है एज अ डॉक्टर का। तो मुझे पूछते थे लोग कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं बोलता था कि आई एम आयुर्वेद कंसल्टेंट फॉर पेन मैनेजमेंट। तो वो स्पेशलिटी मैंने मेरी उनको बताना शुरू किया। देन मेरे मार्केटिंग में मैंने ये बातें इंक्लूड की कि स्पोर्ट इंजुरीज को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था खुद स्पोर्ट में। तो क्या था, सबसे पहली बात ये थी कि सबसे पहला जो मेरा पेशेंट था वो ऐसा था कि टेनिस एल्बो था उसे, और उसने बहुत सारे एलोपैथ्स को दिखा दिया, वो दिखा दिया, कुछ दिन अच्छा रहता था, कुछ दिन नहीं रहता था। वो बॉक्सर था बेसिकली। तो मैंने क्या किया, उसे अग्निकर्म किया, क्योंकि एक सिंपल थिंग बात थी, सिंपल प्रिंसिपल था कि तीव्र स्पर्शासत्व है और पिन पॉइंट पेन है। तो जैसे कि हमें पता है कि कहा जाता है कि भाई अगर कुछ ना काम करे तो अग्निकर्म कर दो, या अग्निकर्म कर रक्त मोक्षण कर दो। मैंने अग्निकर्म कर दिया, तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगा। और फिर उसने उसके सारे बॉक्सर्स को लाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जो कोच है यहाँ के, डॉक्टर सतीश चंद्र भट्ट, मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे। उन्होंने उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आपके पास काफी बच्चे आ रहे हैं हमारे, तो कैसा है आप हमारी एकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तो मैंने जब ज्वाइन कर ली 2017 में एकेडमी, फिर 2 साल कोविड आ गया। फिर बच्चे वापस प्रैक्टिस में आने लग गए। तो जैसे प्रैक्टिस में आने लग गए, तो वो प्रैक्टिस में आने लग गए तो इंजुरीज बढ़ गई, क्योंकि 2 साल का रेस्ट था, अचानक से प्रैक्टिस शुरू कर दी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब सडन चेंज होता है तो इस प्रकार का ये होता है। तो आपको धीरे धीरे तो बच्चों को ट्रीट करना शुरू कर दिया। फिर मुझे थोड़ा सा पता चला कि यार नहीं, इनकी नीड्स अलग है। तो मैं मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे गुरु मेरे थे, गुरु तुल्य दोस्त थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर अरशद, जो कि कोझिकोड में प्रैक्टिस करते थे, और उनका बहुत बड़ा आयुर्वेद स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है। उनका नाम था दाइस्मान आयुर्वेद। आप अभी भी गूगल पे ढूंढोगे तो दाइस्मान आयुर्वेद, उसका लॉन्ग फॉर्म ही था डॉक्टर अरशद स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन हॉस्पिटल। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और उनके पास बड़े बड़े इंटरनेशनल एथलीट्स और एथलीट्स आते थे ट्रीटमेंट करने के लिए, नेशनल। तो तब मैंने देखा, और वापस आके जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की तो अपने आप रिवार्ड मिलने लगे। आज अकोला मेरी सिटी के सारे क्लब्स, फुटबॉल प्लेयर्स, वेट लिफ्टर्स और हॉकी प्लेयर्स, बॉक्सिंग का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे बॉक्सिंग के बच्चे, रनर्स, एथलीट्स। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर अमंग यू दैट अभी तक मैंने 10 इंटरनेशनल एथलीट्स को ट्रीट किया है, जिसमें से 3 इंडिया के लिए गोल्ड जीत चुके हैं। इंटरनेशनल पुलिस गेम्स की जो ओनली मेडलिस्ट है, पूजा भटकर फ्रॉम महाराष्ट्र, ओनली मेडलिस्ट कोरिया में इंटरनेशनल पुलिस गेम्स की, शी इज ऑल्सो ट्रीटेड बाय मी। उसको भी मैंने मेरे यहाँ पे, और वो शी इज माई रेगुलर पेशेंट। उसके बाद में अनंता चोपड़े इज द स्टार बॉक्सर ऑफ इंडिया, ही इज अ रेगुलर पेशेंट ऑफ माइन। हम जब वीडियोस कल डायग्नोसिस के लेंगे, तो आई एम हैप्पी टू शेयर, उसमें से बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, जिनकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऐसा समझिए कि मैंने एक शुरुआत की और कारवां बढ़ता गया। तो वैसे ही आप एक शुरुआत कीजिए, और डेफिनेटली विश्वास रखिए कि यू विल ऑल्सो गेट एक्सेप्शनल सक्सेस। एनी मोर क्वेश्चंस?
प्रवीण जोशी सर हमेशा कहते हैं, और बहुत सारे आयुर्वेद के जो महान शिक्षक है, हमारे गुरुवर्य है, वो हमेशा कहते हैं कि हमने आयुर्वेद को नहीं चुना है, आयुर्वेद ने हमें चुना है। और मेरे बारे में तो पक्का यही कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे कॉलेज लाइफ से लेके तो आगे के 8 साल हार्ड कोर एलोपैथी प्रैक्टिस की है, गवर्नमेंट जॉब किया, और उसके बाद सारा कुछ छोड़ के एब्सोल्युटली मेरे 2 हॉस्पिटल्स, मेरा खुद का अच्छा सेटल्ड जनरल प्रैक्टिस का क्लिनिक और गवर्नमेंट जॉब, ये सारा मुंबई में छोड़ के मैंने मेरी छोटे से शहर अकोला में प्रैक्टिस शुरू की, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मेरे बड़ों के मार्गदर्शन से, और आज आपके सामने हूं। और इस बात का समाधान है कि आयुर्वेद की सेवा करने का मौका मिल रहा है। सो प्लीज हरी अप गाइज, अगर कोई सवाल है तो, या कुछ क्वेरीज है, किसी से कोई बात करनी है, तो ही कैन रेज हिज और हर हैंड, और अदरवाइज वी विल एंड द सेशन बाय 6:15 शार्प। I am waiting for your queries and questions. If there are no queries and questions, should we stop for the day? Yes, Dr. Swapnil Patil. Uh, there are lots of preventive measures for port injuries. We are going to cover it in, I think, lecture number 6. There is also one concept we are going to learn. Might be some of you have heard, that is called, you all have heard about the rehabilitation. पुनर्वास के बारे में आपने सबने सुना होगा, बट स्पोर्ट इंजरी मैनेजमेंट में अभी एक नया कंसेप्ट बहुत पॉपुलर है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है, जिसको कहते हैं प्रीहेबिलिटेशन ऑफ द इंजुरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा या कोई स्पोर्टमैन या कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि एक एक्टिविटी कर रहा है और जिसकी वजह से वो किसी इंजुरी के लिए प्रोन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि एक बॉलर है और वो ही द मीडियम पेसर और दी पेसर, तो उसका कंधा जो है ये हमेशा रिस्क पे रहेगा। अगर उसको फुटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके रनअप में प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई फुटबॉलर है जिसको उसके रनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनका हैमस्ट्रिंग जो है ये रिस्क पे है। और अगर वो बोल रहा है कि मुझे उस हैमस्ट्रिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें उसको इंजुरी होने से पहले ही रोकना है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड प्रीहेबिलिटेशन, इज कॉल्ड एज प्रीहेबिलिटेशन, प्रीहेब। सो ये मुझे ऐसा लगता है ये आयुर्वेद से ज्यादा अच्छा किसी में हो ही नहीं सकता। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्पीक अबाउट द प्रीहेब concept of the sport injury management, and that will also cover the preventive and prehabilitation. So preventive measure तो ये बहुत ही वल्नरेबल ये कीजिए, यानी आप खुद को स्पोर्ट्स प्रीहेब स्पेशलिस्ट बना सकते हैं। स्पोर्ट्स प्रीहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हो। सर हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां से मैं हूँ वहां एलोपैथी लोग फॉलो करते हैं। सर सभी जगह ऐसा ही होता है, जस्ट खुद पे भरोसा रखिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके फ्रेंड्स,
I think that there are no more queries. See you tomorrow with some wonderful experience. Those who have not enrolled for the course 8, they can definitely with confidence can enroll. The fees for the course deliberately we have kept so less because this course normally I took for the coaches, sport coaches is of 5,000 rupees. For the sport coaches and for sport personnel, this course cost 5,000 rupees. But I want my Ayurved peoples to come up and enter into this field. So we have reduced or minimized these fees to 1,500 rupees only. This is just cheaper than a good quality shirt or a good quality cloth. So thank you very much and see you tomorrow. Till then, take care, stay happy.